Hello everyone. In a previous class, we discussed about the hybrid model or H parameter of the amplifier. We also discussed about the frequency response of the amplifier or transistor as an amplifier. तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब इस लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So in this lecture we will study about the syllabus of unit 3. After this we will move the introductory part of feedback amplifier or what is it. Next we will move on type and classification of feedback amplifier. Next one is feedback amplifier topologies. After this we will study about the amplifier characteristics, advantages and disadvantages of the amplifier, or we can say the feedback amplifier. Next one is the application of feedback amplifier in different areas, and finally the references of this presentation. So in this lecture we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1, syllabus of unit number 3. So in this unit we will study about the feedback amplifier and oscillator circuits. Inside this we will learn about feedback amplifier, introduction of feedback amplifier, what is it, and the types of feedback amplifier, negative feedback amplifier as well as the positive feedback amplifier, some different topologies of feedback amplifier like voltage series, voltage shunt, current series and current shunt feedback amplifier, sinusoidal oscillators, LC oscillators, RC phase shift, Wien's bridge, crystal oscillators. We will also study about the power amplifiers, class A, class B, class AB and class C amplifiers and their efficiency and power dissipations. Push-pull and complementary symmetry push-pull amplifier. तो यूनिट नंबर 2 में हम ये जो सारे टॉपिक हैं ये एक के बाद एक कवर करेंगे। इस वाले लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है और टाइप, जिसमें हमारा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर एज वेल एज दी पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर आएगा। इसके बाद हम इस लेक्चर में कवर करेंगे फीडबैक टोपोलॉजीज, फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजीज, जिसमें आपका वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज एंड करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर आ जाएगा। तो ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। So the next topic is introduction of feedback amplifier. An amplifier circuit is simply used for increasing the strength of the signal. नॉर्मली हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि एम्पलीफायर सर्किट क्या होते हैं। एम्पलीफायर सर्किट एक्चुअली इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बूस्ट करके हमें आउटपुट में देता है, इसीलिए हम इसको एम्पलीफायर बोलते हैं। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज प्रोवाइड द बूस्टेड आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द इनपुट्स। Although while amplifying, the input signal strength can be increased.
whether it include information, otherwise information with some noise. This noise can be introduced in the amplifier due to their strong tendency, otherwise stray magnetic as well as electric fields. तो जब हम सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं तो उसमें कुछ नॉइस सिग्नल भी आ जाते हैं। नॉइस सिग्नल कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या होते हैं? नॉइस सिग्नल एक्चुअली अनवांटेड डिस्टरबेंस होता है जो कि हमें अपने आउटपुट सिग्नल में नहीं चाहिए होता है या कम से कम चाहिए होता है, तो उसको हम मिनिमाइज करते हैं। और नॉइस सिग्नल आता कैसे है? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अगर आसपास है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके थ्रू जो है वो सिग्नल में हमें नॉइस मिलता है। बाय यूजिंग फिल्टर्स हम नॉइस को कम कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। Thus, each high gain amplifier is labeled in its output to provide noise along with the signal, which is very required. Now next is what is feedback amplifier. तो फीडबैक से हमें क्या समझ में आता है? फीडबैक मतलब आउटपुट को अगर हम फिर से इनपुट में दे दें, जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको हम फीडबैक करके अगर इनपुट में फिर से सप्लाई दे दें, तो ऐसे डिवाइस को या ऐसे सर्किट को हम फीडबैक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो द फीडबैक एम्पलीफायर कैन बी डिफाइंड एज एन एम्पलीफायर विच हैज फीडबैक लेन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द आउटपुट टू इनपुट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो फीडबैक एम्पलीफायर होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें एक हमारी फीडबैक लेन होती है या लाइन होती है जो कि एग्जिस्ट करती है कहाँ? आउटपुट से इनपुट के बीच में। और सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं अगर हम आउटपुट जो हमारा पावर आ रहा है उसको अगर हम इनपुट में बाय यूजिंग लेन फीडबैक कर पाते हैं तो उसको हम फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट बोलते हैं। Definition of feedback amplifier. Feedback amplifier is a device that is based on the principle of feedback. The process by which some part or friction of output is combined with the input is known as feedback. हम सारा का सारा आउटपुट इनपुट में फीडबैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सारा आउटपुट इनपुट में फीडबैक कर देंगे तो हमारा सिस्टम काम ही नहीं करेगा। फिर सिस्टम का क्या मतलब है? एक्चुअली जो हमारा कुछ पार्ट रहता है जो लॉस में जा रहा होता है, या ऐसा पार्ट कुछ फ्रैक्शनल पार्ट या बहुत ही कम पार्ट आउटपुट का जो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम एक लेन के थ्रू अगर इनपुट में फीडबैक दे देते हैं तो ऐसे सर्किट्स को हम फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट बोलते हैं। In a simple word, we can say feedback amplifier are the type of amplifiers in which a part of the output is given back to the input. वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम में ये जो A लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड एज एम्पलीफायर, और B जो लिखा हुआ है ये होता है हमारा फीडबैक गेन। बीटा जो होता है वो फीडबैक गेन होता है, और ये हमारा जो है फीडबैक नेटवर्क है। तो देखिए ये हमारे पास वोल्टेज Vs इनपुट है, यहाँ से हमारा V आउटपुट निकलेगा, और ये जो हमने यहाँ से एक लाइन बनाई है थ्रू फीडबैक गेन के और वापस से हमने इनपुट में दिया हुआ है एम्पलीफायर सर्किट के, इसको हम बोलते हैं फीडबैक पाथ या फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, और इसको लगा के रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव पॉइंट। तो इसको इस सर्किट को हम बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। As we know that an amplifier is a device that amplify the signal. एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देना। एम्पलीफायर सर्किट में हम ट्रांजिस्टर, बीजेटी, मॉसफेट, जेएफईटी कुछ भी हम यूज कर सकते हैं जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में हमें देगा। When we talk about an ideal amplifier or ideal amplifier, there exist some important characteristics like the voltage gain, input impedance, output impedance, bandwidth और current gain। ये चारों पैरामीटर मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में निकलवाया है। These parameters of an amplifier are controlled by employing a feedback network. Thus, a feedback network is employed in an amplifier so as to control the gain and the other factor of the device. Next is concept of feedback. So the figure below
represent the block diagram of an amplifier employing feedback network. तो सबसे पहले हम इसको समझें, हमारे पास जो होता है सिग्नल उसको हम सोर्स सिग्नल बोलते हैं, जिसको हमने Vs से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हमारे पास मिक्सिंग या मिक्सर नेटवर्क होता है जो कि सिग्नल को मिक्स करता है। इसके बाद ये हमारा होता है बेसिक एम्पलीफायर विथ गेन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास सोर्स सिग्नल है Vs प्लस माइनस, हमने Vf को क्या किया, इसको मिक्सिंग कर दिया सिग्नल को, और यहाँ पे हमें इसको सैम्पलिंग नेटवर्क में हम इसको भेज देते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे V0 आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है एम्पलीफायर फॉर्म में। अब कुछ पार्ट तो ये RL में यूज हो जाता है V0 का, और जो पार्ट यूज नहीं हो पाता है उसको हम थ्रू फीडबैक नेटवर्क बीटा, तो ये जो दो पाथ आप देख रहे हैं, ये पहला पाथ और ये दूसरा पाथ, ये दोनों की दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, फीडबैक पाथ। तो ये फीडबैक पाथ अगेन मिक्सचर में ये जो Vf है इसको हमने ऐड कर दिया। जब V0 को हम फीडबैक गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें Vf सिग्नल मिलता है, और इस Vf को जब हम मिक्सर में ऐड कर देते हैं तो ये फिर से हमारा इनपुट में हम एम्पलीफायर सर्किट को दे देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं फीडबैक कॉन्सेप्ट। आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। The various blocks of the feedback amplifier sections are discussed below. पहला जो है वो है signal source. The signal source can be a voltage source Vs in series with resistor Rs, or it can be a current source Is with parallel resistor Rs. Feedback network. A feedback network is a linear two-port network that contains resistor, inductor, and capacitor. Its function is to feed back some portion of the output to the input. Next is a sampling network. These are basically of two types, current sampling network and voltage sampling network. Depend करता है हमारा सिग्नल कैसा है। अगर हमारा वोल्टेज सिग्नल है तो यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग नेटवर्क यूज होगा, अगर हमारा करंट सैम्पलिंग है तो करंट सिग्नल है तो करंट सैम्पलिंग नेटवर्क यूज होगा। The output of the voltage is sampled when we connect feedback network in either shunt or in series with the output. Next is a mixture. Mixture circuit is also known as comparator. It can be a series mixture or shunt mixture. It mixes the source signal and feedback signal. Mixer का काम होता है source signal को feedback signal से mix करना, thus produce the positive और negative feedback for the device. और इसी से हम positive और negative feedback device को देते हैं या provide कराते हैं. So this is the concept of feedback. Next is the operation of feedback amplifier. फीडबैक एम्पलीफायर कैसे काम करता है? Let us have a look at a diagram so below. So this is the diagram for feedback amplifier. इसमें हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ है। इनपुट सिग्नल है Vs, इसकी पीक वैल्यू यहाँ से हो जाएगी Vm, पॉजिटिव Vm ऊपर, और नीचे हम लिखेंगे तो नेगेटिव Vm हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट सिग्नल या इसको हम सोर्स सिग्नल भी बोलते हैं। ये सिंपल सा एक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है ना, एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क से बहुत रिलेटेड है, जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस उस सब्जेक्ट से। सबसे पहले इनपुट सिग्नल Vs हमने दिया पॉजिटिव, ये हमारे पास समेशन का ब्लॉक होता है जो कि सिग्नल को सम करता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा Vs जो गया, Vs में अब ये हमारा फीडबैक जो है, फीडबैक यहाँ से जो हमने दिया हुआ है, ये फीडबैक बीटा इनटू आउटपुट सिग्नल, ये हमारा Vf जो आ गया फीडबैक सिग्नल। अब ये फीडबैक सिग्नल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, डिपेंड करता है कि Vf की वैल्यू कितनी है। तो अभी हमने लिखा है यहाँ पे Vs, सबसे पहले हमने एक सोर्स सिग्नल दिया समेशन ब्लॉक में, फिर यहाँ से जो सिग्नल है वो Vd सिग्नल एम्पलीफायर को गया, एम्पलीफायर का गेन जो है वो A है, और हमें यहाँ पे आउटपुट V0 मिल गया। आप देख पा रहे हैं V0 जो है उसका एम्पलीट्यूड इनपुट से ज़्यादा है, मतलब इनपुट सिग्नल को बूस्ट करके आउटपुट सिग्नल मुझे मिल रहा है, मतलब एम्पलीफायर सर्किट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है आउटपुट का, उसको हम फीडबैक नेटवर्क, और फीडबैक नेटवर्क का जो गेन होता है उसको हम फीडबैक गेन बोलते हैं, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा से ये जो मेरा V0 का कुछ पोर्शन आ रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पे
जो है फीडबैक सिग्नल मिल जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट, ये सिग्नल हमने प्लस माइनस करके समेशन ब्लॉक में दे दिया। तो अब जो सिग्नल है वो यहाँ पे वीडी सिग्नल जाएगा। ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से जो है फीडबैक एम्पलीफायर जो है वो वर्क करता है। Here we are taking about the general condition in which we are providing feedback to the input. It can be positive feedback or negative feedback. अब फीडबैक हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। An input signal Vs is applied to the amplifier with gain A. गेन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वोल्टेज गेन क्या होता है और करंट गेन क्या होता है। वोल्टेज गेन जो होता है वो रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, मींस ए वी इज इक्वल टू होता है वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई। ऐसे ही करंट गेन भी हमने निकाला है, तो करंट गेन ऑल्सो द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट that produce an amplified signal V naught. A portion or a fraction of this V naught is then feed to a feedback network having the gain beta. Beta is called the feedback gain. The output of feedback network is VF. This signal is then given to summer or a mixer. सम सर्किट को हमने समर लिखा हुआ है, और मिक्सर दैट रिजल्टेंटली प्रोड्यूस्ड आइदर सम और डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल डिपेंडिंग ऑन देयर फेज रिलेशनशिप। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज गिवन एज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट टू द इनपुट वोल्टेज और करंट। So, for the above figure, the gain of the circuit without feedback is given as, this is called the voltage gain, तो हम इसको AV से रिप्रेजेंट करेंगे, is equal to V naught divided by VD। इसमें हमने जो इस सर्किट डायग्राम में इनपुट सिग्नल लिया हुआ है वो हमारे पास VD है VI की जगह, इसीलिए हमने V naught divided by VD लिखा है। This is called the voltage gain of the feedback amplifier. This is called equation number 1. Next, the gain of feedback network is given as, this is called the feedback gain represented by beta. अभी हमने देखा था फीडबैक सिग्नल VF इज इक्वल टू होता था बीटा डिवाइडेड बाय V नॉट, तो उससे हम फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं बीटा की, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा VF डिवाइडेड बाय V नॉट। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. But as we can see, VD is the mixture output voltage given by VD is equal to Vs plus minus Vf. This is equation number 3. The signal voltage Vs and mixer output voltage Vd will only be equal in a feedback amplifier unless the output is not generated. From equation 1 we can write as V naught is equal to A into Vd. This is called equation number 4. Substituting the value of Vd in equation number 4, so we get V naught is equal to A in bracket Vs plus minus Vf bracket close. This is equation number 5, where V naught is equal to output voltage, A is called the gain, Vs is called the source voltage, and Vf is called the feedback signal. From equation number 2, Vf is equal to beta into V naught. This is equation 6. Substituting the value of Vf in equation number 5, so we get V naught is equal to A in bracket Vs plus minus beta into V naught. Multiply the A inside bracket, so we get V naught is equal to A into Vs plus minus A into beta into V naught. So we rewrite the equation V naught plus minus A into beta into V naught is equal to A into Vs. So V naught in bracket 1 plus minus A into beta is equal to A into Vs.
So V naught by Vs is equal to A divided by 1 plus minus A into beta. Or we can say that the voltage gain or feedback signal voltage gain AVF is equal to A divided by 1 plus minus A into beta, where V naught by Vs is equal to AVF. This is the desired value for the gain of the feedback amplifier. ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए डिजायर्ड होती है हर फीडबैक एम्पलीफायर से. The gain of an amplifier is always greater than 1. This simply means that some elements are present which increase the gain of the amplifier. That element can be a transistor or MOSFET or JFET. But a feedback network is always a linear network consisting of RLC element, and it does not contain any such amplification device. That's why the value of VF is always less than to V naught. तो जो VF है फीडबैक सिग्नल है उसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी हमारी आउटपुट सिग्नल V naught से. So बीटा is always less than 1. So this is all about the operation of a feedback amplifier. Next is types of feedback amplifier. So the feedback amplifier is broadly classified into two categories. First one is called positive feedback amplifier and second is called the negative feedback amplifier. The procedure of introducing some devices output energy friction from back to the input is termed as feedback. This is mainly used to reduce the noise as well as to make the operation of an amplifier is constant. This amplifier can be classified into two types based on the feedback signal, such as positive feedback amplifier and negative feedback amplifier. So first one is positive feedback amplifier. It is a type of an amplifier in which source signal and the feedback signal are in same phase. Thus, the feedback signal applied increase the strength of an input signal. तो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है जिसमें हमारा सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों सेम फेज में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड करते हैं और स्ट्रेंथ जो मिलती है सिग्नल की हमें वो ज़्यादा मिलती है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सोर्स सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर इन सेम फेज. सेम फेज का मतलब होता है कि जब हमारा पहले वाले सिग्नल का पॉजिटिव पीक आ रहा है तभी हमारा दूसरे वाले सिग्नल का भी पीक आए, तो इसका मतलब है ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड में और सेम फेज में हैं. सिमिलरली जब नेगेटिव फेज आए तब इसका भी नेगेटिव फेज आए, इसको हम बोलते हैं सेम फेज. द पॉजिटिव फीडबैक कैन बी डिफाइंड एज व्हेन द फीडबैक करंट otherwise voltage is applied for increasing the input voltage, then it is named as positive feedback. Direct feedback is the another name of this positive feedback. Because positive feedback generate unnecessary distortion, it is not often used in amplifiers, but it amplifies the original signal power and can be used in oscillator circuits. So this is the diagram of positive feedback amplifier as well as the negative feedback amplifier. इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है और सोर्स सिग्नल है दोनों का सेम फेज है, और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में जो होगा वो फेज अपोजिट होगा. जब हमारा इनपुट सिग्नल का फेज पॉजिटिव होगा तब हमारा फीडबैक सिग्नल का फेज जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम उसको नेगेटिव एम्पलीफायर सर्किट बोलेंगे. चलिए देखते हैं. Next is a negative feedback amplifier.
In this type of amplifier, source signal and feedback signal are out of phase with each other. Thus, the feedback signals applied to decrease the strength of input signal. अब जब दोनों का फेस अपोजिशन है और अपोजिट है तो जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। ये देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ सोर्स सिग्नल, VS इज कॉल्ड सोर्स सिग्नल एंड VF इज कॉल्ड द फीडबैक सिग्नल। तो जब इसका पॉजिटिव फेस मिल रहा है तब इसका हमें नेगेटिव फेस मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। The negative feedback can be defined as if the feedback current, otherwise a voltage, can be applied for reducing the amplifier input, then it is called as negative feedback. Inverse feedback is the another name of the negative feedback. This kind of feedback is regulatory used in amplifier circuits. This is the diagram of negative feedback amplifier. Next topic is feedback amplifier topologies. There are four basic amplifier topologies for connecting the feedback signal. Both the current as well as the voltage can be feedback towards the input in series, otherwise in parallel. टोपोलॉजीज का मतलब होता है डिज़ाइन सर्किट का, ऐसा डिज़ाइन जिसमें हम फीडबैक सिग्नल को कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ। तो वो हम चार तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास चार अरेंजमेंट होते हैं फीडबैक एम्पलीफायर के। दो जो होते हैं वो करंट बेस के होते हैं, दिस इज कॉल्ड द करंट सोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड द करंट सोर्स, दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज सोर्स, दिस इज आल्सो। अब करंट मेरे पास है दो करंट के अरेंजमेंट या टोपोलॉजीज हैं और दो वोल्टेज की टोपोलॉजीज हैं। अब इसमें एक और चीज होती है, करंट अगर सीरीज में लगाएंगे करंट सोर्स को तो एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, दूसरे हम करंट सोर्स को पैरेलल में लगाएंगे। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स को एक बार हम सीरीज में लगाएंगे और दूसरे बार हम पैरेलल में लगाएंगे सर्किट के साथ। तो ऐसे हमारे पास टोटल 4 टोपोलॉजीज होती हैं फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजी। फर्स्ट वन इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, मतलब वोल्टेज जो है हमने वो सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर एंड करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये चार टोपोलॉजीज हमारे पास हम डिजाइन करते हैं फॉर फीडबैक एम्पलीफायर के लिए। तो चलिए इनको हम देखते हैं डिटेल में। तो पहला देखते हैं, द फर्स्ट वन इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। In this type of circuit, a portion of the output voltage can be applied to the input voltage in series through the feedback circuit. So this is called the voltage series feedback amplifier. The block diagram of the voltage series feedback amplifier is shown in the above figures, by which it is apparent that the feedback circuit is located in shunt by means of the output, although in series by means of the input. When the feedback circuit is aligned in a shunt through the output, then the output impedance will be reduced and the input impedance is enlarged because of the series connection with the input. Next one is voltage shunt feedback amplifier. In this type of the circuit, a portion of output voltage can be applied to the input voltage parallel with through the feedback circuit. शंट में क्या करते हैं, हम पैरेलली वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, आउटपुट जो वोल्टेज है उसका कुछ पोर्शन। सो दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज शंट और वोल्टेज पैरेलल फीडबैक एम्पलीफायर। The block diagram of the voltage shunt feedback amplifier is shown in the above figures, by which it is apparent that the feedback circuit is located in shunt by means of the output as well as the input. When the feedback circuit is aligned in shunt through the output as well as the input, then both the output impedance and the input impedance will be reduced or decreased. Third one is current series feedback amplifier.
In this type of circuit, a portion of the output voltage is applied to the input voltage in series through the feedback circuit. The block diagram of the current series feedback amplifier is shown in the above figure, by which it is apparent that the feedback circuit is located in series by means of the output as well as the input. When the feedback circuit is aligned in series through the output as well as the input, then both output impedance and input impedance will be increased. Number 4 is current shunt feedback amplifier. In this type of the circuit, a portion of the output voltage is applied to the input voltage in the shunt through the feedback circuit. The block diagram of the current shunt feedback amplifier is shown in the above figure, by which it is apparent that the feedback circuit is located in shunt by means of the output as well as the input. When the feedback circuit is aligned in series through the output, however in parallel with the input, then the output impedance will be increased, and because of the parallel connection with the inputs, the input impedance will be decreased. So this is all about the 4 topologies of feedback amplifier. Next is amplifier characteristics. The amplifier characteristics, which are affected by various negative feedback, are listed in the following tables. So this is the table. First column is feedback topology, second is input resistance, and third column is output resistance. So first one is voltage series. So the input resistance increase and output resistance decrease. In a current series, the input resistance is increased and output resistance also increase. In current shunt, the input resistance decreases and output resistance increase. And voltage shunt, the input resistance decreases and output resistance also decrease. तो इस टेबल के थ्रू हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारी टोपोलॉजी रहेगी उसमें इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। The most widely preferred amplifier among the two types of the amplifier is the negative feedback amplifier. तो दोनों में से जो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है या ज़्यादा यूज होता है वो होता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर. So the characteristics of the negative feedback amplifier are: in the topology of the feedback amplifier, in the voltage series feedback, the input impedance value increase and the output impedance decrease. In the topology of the voltage shunt feedback, both the input and output resistance value are decreased. In the current series feedback circuit, both the input and the output resistance are increased because of its topology. In the current shunt feedback topology, the amplifier input resistance decrease and the output resistance decrease because of its connectivity of the input, output and feedback circuit. Next is, in this way, the characteristics are defined based on the various topologies. Each topology defined has its significance of utilization. Next topic is advantages and disadvantages of feedback amplifier. The advantages of feedback amplifier include the following. Number 1. The amplifier's gain can be stabilized by the negative feedback. Number 2. The particular feedback configurations can be increased by the input resistance. Number 3.
the output resistance will be decreased for particular feedback configurations. Number next, the operating point is stabilized. And number next, disadvantage of this amplifier is gain reduction. तो ये जो हमने देखा है ये सारा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए देखा है, क्योंकि जो हमारा ज़्यादा यूज होता है वो नेगेटिव एम्पलीफायर या नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ही ज़्यादातर यूज होता है. So these are the advantages as well as the drawbacks of negative feedback amplifier. Next topic is the applications of feedback amplifier. The positive feedback amplifier is good at obtaining the gain value, but it results in the distortion of the signals. Hence, it is not preferred during the amplification. But the negative feedback consists of the characteristics that minimize the noise level from the system. The applications of negative feedback amplifier are listed as follows. Number 1. It can be preferred in the regulated power supply, in short RPS. Number 2. The amplifier where the large bandwidth is required to these feedback amplifier are used. Number next, it can be used in various amplifiers design of the electronic field. So these are some application of negative feedback amplifier circuit. Hence, we can give a conclusion on the feedback amplifiers with the basic block diagram and the basic topology that enhance its functionality. It is well defined with its two basic type of positive and the negative, whereas the negative feedback is preferred over the positive feedback in the amplification of the signals. Number next is the references of this presentation. So these are the references. So this is all about the feedback amplifier, the classification of feedback amplifier and feedback amplifier topologies. So any doubt anybody, so please ask me, and thank you for watching this video.